Okay, so good evening all. Thank you for joining the Adda session today. So it is one of our interesting topics, one of the most interesting topics that we are taking up in this Adda. Previously, we had some academic topics and all those, but today is something which I think each one of us can relate to. So there is a famous couplet, and lot of you might be aware that the couplet says that सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ जिंदगानी कर रही तो फिरे जवानी पे फिर कहाँ. So Yeah, that so everyone of us likes to travel, and young age is the prime age in which we can actually fulfill this wish. So, and who better than Ayush Bhaiya to actually enlighten us about this aspect. So he has visited almost 70 countries, and he will be sharing some of the key lessons that he has learned over his journeys to various countries. So now I would invite Abhishek Bhaiya to actually moderate the session here onwards. So please. Hi all, Ayush and Ayush comes from 2000 batch class 10. So हम लोग join किए थे 1994 में class 5 में, but the batch started from 93 onwards. So Archesh I can see, Rohit I can see, they all joined in 93. फिर Ayush class 12 तक continue किया वहाँ पे, and they were the first RKM plus 2 batch. So बहुत मचाया ये लोग, विपुल महाराज को बहुत परेशान किया उस टाइम, स्टोरीज सुने थे 11-12 का. तो ये है. और आयुष मतलब हम लोग के बैच का मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉयज बोल सकते हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एंड एज अ पर्सनालिटी, प्लस ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड गाय, एंड मतलब he has vast experience all over the world over last 10-15 years. He has traveled, like he will talk about it. आयुष का जो सबसे बड़ा टैलेंट है, other than like he has cracked IIT on the first go, IIM on the first go, like beside all these things which is very obvious, which was expected from him, but uska biggest talent is he's a amazing orator and he's an amazing like storyteller. मतलब आयुष के साथ बैठोगे कब सुबह से शाम हो जाएगा स्टोरी सुनते सुनते, मतलब पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली. और इतना स्टोरीज है उसके पास, इतना एडवेंचर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैनेजमेंट रिलेटेड, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, फैमिली, चाइल्ड अपब्रिंगिंग का भी बहुत सारा तुमको इंसाइट मिलेगा उससे. एंड लाइक आई वाज वेरी लकी कि मैं अपना फैमिली को लेके आयुष के घर विजिट किया हूँ दुबई में ट्वाइस एक्चुअली. तो एंड लाइक दे हैव बीन ग्रेट होस्ट. And like it's a pleasure to be with Ayush all the time whenever I meet him. And like I think I will not take more time and leave it to Ayush to give his experience of life, but he's an amazing storyteller, so just go and listen to his story. Thank you, Gon. Yeah, the emotional types mera introduction hua. As any of you, like being able to talk to your alumnus and to your friends and to share gyan with everyone, मतलब बहुत ही overwhelming. So I'll try my best to fulfill that expectation that you have from my side. So basically, like I've been to 67 countries, 70 countries just sounded better. And during this session, I would like to just share my experiences traveling to these countries, and also give you a lot of information on how I kind of experience these countries and experience the people around there. Before moving, Gon had already introduced myself, but so I am a marketing guy, core marketing guy. Currently, I take care of spinal implants, robotics, and artificial intelligence portfolio for Medtronic in Canada. Actually, Riteshda had approached me for a session on healthcare, but then I thought सब लोग तो ज्ञान देते ही है करियर के बारे में. I'll do something different. Life में कुछ और भी gain किया है apart from the professional journey, so why not share that part of it? I'm 38 years old. Yeah, that means I'm getting old every day, and I've always been risk averse. A lot of you from my batch would remember I was not a guy who would just go in and do something like Bhandar Loot or something. I was a very risk averse guy. I always used to be in my own way of things. Like
किताबें पढ़ते थे, प्ले टाइम में राउंड ही लगाते थे उतना, मतलब I was very very risk averse. But during my travels I have been more and more, I have taken lots of risks, and some of the stories you'll hear, I just did some things which are really foolish if you think from a traveler's point of view. I love eating different kinds of meats. I have tried some weird meats possible and have traveled forgotten roads. In terms of professional experience, lucky to have worked in Tata Motors. I also had a very nice stint with the base repair depot at Indian Air Force. Worked on Antonov planes, did a project on like reinstating some of the old Antonovs. Very interesting project. And then I was in PNG, Singapore, got an offer to work with them. And then I met someone who said, why are you selling shampoos when you can be selling pacemakers? And that's how I started my journey with Medtronic. And I've stayed with Medtronic for the last 13 years now. They have helped me, move around different regions, different roles. बहुत सारे अलग-अलग roles किए. As मेरे intro में लिखा हुआ था कि in my previous role, I actually managed a huge region, like 102 countries, from Poland to Pakistan, pura. And I'm not saying to brag कि मैंने खूब countries manage किए, ऐसा नहीं. It's more about the kind of experience you get when you meet different people, when you manage different kinds of geographies. उनके regulatory अलग होते हैं, उनके systems अलग होते हैं, लेकिन उनके लोग अलग होते हैं, उनके distribution जो distributors होते हैं, उनकी mentality अलग होती है. And that has been a great experience. I've been blessed to have that experience. Some fun facts. काफी बार बोल दिया, 67 countries. Before you ask, Japan and Turkey are my favorites for travel, and I loved both these places. तो अगर कभी जापान जा रहे हो और टर्की अभी हाल में गॉन गया था, just I'll have lots of ज्ञान to share. Apart from that, एक interesting fact है मेरे बारे में कि जब मैं विद्यापीठ में था तभी मुझे मेरी वाइफ से प्यार हो गया था. मतलब वो मेरी नेबर थी, एंड मेरे फ्रेंड्स के काफी सारे स्लैम बुक्स में मैंने लिखा था, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि मैंने लिख दिया था कि हाँ, मेरे और शिल्पी के शादी में जरूर आना. इतना कॉन्फिडेंस लेवल था. उस समय कोई मुझे भाव भी नहीं दे रही थी वो. But then how, like as fate would have it, we've been married now for 12 years. We have a 9-year-old kid. Hobbies wise, I like poetry. I read a lot of poetry. I write them as well whenever I get time. Apart from that, I travel and dine like a local. And I also do a lot of trekking. So I've been, I don't do like proper harsh mountaineering kind of thing, but I trek as high as I can go, and wherever I get an opportunity, I get into trekking. So before we kind of move ahead, let me give you a warning, sort of. I request you to see my lessons as a humble attempt to share my experiences, और prescriptive या ज्ञान देने का इरादा नहीं है. So take it with a pinch of salt or a glass of chireta. Also note that I'm not a great photographer, but I've still wanted to, use my pictures. So कुछ pictures लगेगा कि ऐसा कैसा गंदा picture दिया है जापान का, लेकिन मुझे वही मिला अपने पुराने phone सब में. So I've tried to use as much as possible my own pictures. So, you can define your life in different ways. So I'm trying to define my life in a very, very narrow way in the terms of countries that I have visited. So these are the countries which have, this is my map. There's a saying ki of all the books in the world, the best stories are found between the pages of your passport. So मेरे passport में ये कहानियां भरी हुई हैं. और as you can see, शुरुआत आप ही लोग generally सब लोग जैसे सबके साथ होता है वही हुआ. इंडिया ही एक ही कंट्री था. फिर मेरा घर एक्चुअली नॉर्थ ऑफ बिहार में है, तो इट्स क्वाइट क्लोज टू नेपाल. तो एक दिन रिक्शा पकड़ा, शॉपिंग करने के लिए नेपाल चले गए. दैट वाज माय सेकंड कंट्री. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव आउट ऑफ. पहली बार सिंगापुर वाज अ प्लेस जहां मुझे इंटर्नशिप मिली एक. एंड देन that became a base to travel all around, and that's when I first went to Laos, Cambodia, Brunei, Indonesia. Uske baad fir that was the key. Singapore again, it's a great city. I will talk about it in one of my lessons. And from then I started hitchhiking. Again, anyone who has done hitchhiking, they would have started in Southeast Asia. I did the same, and the same year I also got hitched. Like
one of the best weddings because it was one of the earliest weddings. मेरे शादी में बहुत सारे विद्यापीठ के लोग आए. And then the main jump, as you can see, happened when I moved to Dubai. So Dubai wale role mein, as I said, I used to handle 102 countries. So in just 2015, I added 14 new countries. I kept on traveling. And एक बार दुबई में एक तो पैसा मिल जाता है, to be honest, और एक बार आप घूमना शुरू कर देते हो तो then ये कीड़ा आप अपने फैमिली को भी ट्रांसफर कर देते हो. So my son has also, he's just 9 years old. He has been to 13 different countries, exotic ones, you know, Japan, China types, Jordan, everywhere. So he's been everywhere. Currently, I'm still an Indian citizen. So I'm using my fifth passport document because mere passport, despite thick hone ke bhar jate hain, Indian passport is not that strong. One of the reasons I have moved to Canada is not to gain a lot of, ऐसा नहीं है कि मेरा देश प्रेम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. Passport बड़ा strong है उनका. तो थोड़ा मैं उनको abuse करना चाह रहा हूँ. I'm trying to get that benefit out of that paper, that document. That paper is what I'm looking for. And to be honest, after traveling all this so-called 67 countries and all, there's miles to go because I have not even touched 3 continents. So I have not been to any of the South American countries or Australia or of course Antarctica. And then last few years have been have not been able to add any countries to it. One that I moved here in Canada, and mostly, and there are a lot of scope to add countries when I go to Caribbean and South America, but mostly we have been caged due to COVID, right? So how has travel transformed me? So travel has transformed 2 things in me. One is, of course, it's my attitude. It has made me humble, a little humble at least, understanding, and has helped me realize that happiness is subjective. Happiness is subjective. It comes from really trivial things. छोटी-छोटी चीजों से हमें खुशियां मिलती है, right? And it has also made me appreciate humanity, but also, detest or abhor the lack of human dignity. So humanity है चारों तरफ, very good, but human dignity की थोड़ी कमी है. But more than attitude, it has given me altitude. Altitude not in terms of like flight altitude, that of course, but mainly the ability to see the bigger picture. क्योंकि इतना घूमोगे ना आप, तो आपको एक आप चीजों को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर देते हो. It allows you to get a big picture perspective on things, to see how various cultures, they mesh and collide with one another, and how the different streams of history, geography, the history has eroded and hardened each country's social structure into what they are right now, to their respective places. And listen to me carefully. When you travel, you realize that much of what you believe to be unique in India is often universal. And that much of what you thought was universal is actually often specific to India. हम सोचते हैं कि यार इंडिया में ऐसा है तो बाकी दुनिया में भी ऐसा होगा. नहीं होता है. और कई बार हम सोचते हैं कि यार इंडिया में तो बड़ा ये सिर्फ इंडियन लोग ऐसा कर सकते हैं. वो भी नहीं होता है. तो ये ट्रैवल एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करता है, which I see when I talk to a lot of my relatives and friends and who have not traveled much. I see that difference because they've somehow, and it's not their fault, it's just that how it is. Like I was in that bubble for a lot of my life. So हम लोग एक बबल में रहते हैं कि यार इंडिया में ये चीज यूनिक है, इंडिया में ये चीज यूनिवर्सल है, मतलब ये तो सब जगह होता है. But that's not true. आप जाओगे रवांडा और देखोगे कि रोड्स वहां ज्यादा अच्छे हैं हमारे से, क्लीनलीनेस भर के है. रवांडा अफ्रीका में कहां पर, लेकिन ऐसा होता है. This is how travel changes your perceptions about places and about your own country itself. So there is let's start with the first lesson, right? It's human beings are inherently kind. Now I'm trying to say कि कोई भी आदमी है वो actually में दिल से कहीं ना कहीं अच्छा आदमी है, यही मैं कहना चाहता हूँ basically. So there is a very nice quote by this famous painter called Benjamin Hayden. He says, "There surely is in human nature an inherent propensity to extract all the good out of all the evil." And when you travel, you encounter both good and bad. I have seen beheadings in Saudi. I have got scammed countless number of times, lost flights and money, met stone-hearted people. But then also I strongly believe that humanity is inherently good, not entirely selfless. I'm not saying that they're selfless or so, but not selfish either. And when you travel, you realize that humans are by and large the same. वही needs हैं, वही desires हैं, वही biases हैं, वही awful biases हैं, जिनके कारण आपस में हम लोग झगड़ा करते हैं, right?
तो humans by and large किसी भी country में same है. So let me start with one story then. So this is an example from one of my travels to the great country of Iran, Persia, Faras, right? Now, Iran is a very unique place. I often call it a place of contradictions. You'll find people drinking Coke in restaurants with anti-American murals. Women in, mandatory, but, carelessly hanging hijab, singing hips don't lie in a party, And I've been to Iran 3 times, love the people, gajab hospitable log hain, the food, the culture. And I've had many adventures in Iran, partying the whole night when they qualified for their Football World Cup in 2017, I guess, for attending a crazy wedding party, dance, music, kebab, India jaisa ekdam barat warat sab nikalta hai unka. But the memory, the story that I'm sharing today, that is very, like, I don't have pictures, a lot of pictures from there, but I have 2 of them. So I'm sharing today has left an, indelible mark on me. So this was my second trip, 2015. And after my work was done in Tehran, our local distributor, Behramji, Mr. Behram, asked his Kurdish employee, Arash, उसको एकदम इंग्लिश नहीं आती थी, उसको बोला कि आप लेके जाओ आयुष को, उनको इस्फहान नाम का सिटी दिखाओ. This picture I had taken in Isfahan. It's as like you don't have to add any filter for those pictures. They बहुत मस्त blue रहता है उनका mosque वगैरह. So he said कि जाओ इस्फहान जाओ, 4 hours south of Tehran है. And then because he had his house in a place called Qom, so Isfahan is here, Tehran is here, Qom is in the middle. He said that वहाँ पर drop me and I'll take a bus to Tehran. It's quite close to Tehran. So I had a wonderful day. I visited this Abbasi mosque, other landmarks. And while returning, we stopped in Qom near this deserted wetland area, Behest Masume. And Arash dropped me, kaha ki bus will come in half an hour. 6 बज रहे थे शाम के. मैं थोड़ा एडवेंचरस हो गया हमेशा की तरह और रोड से थोड़ा घट के ये जो वेटलैंड एरिया यहाँ पे मैप में दिख रहा है, पानी वानी को फॉलो करता करता ऐसे किसी एरिया में पहुंच गया. ये भी पिक्चर मैंने लिया था. दिस इज द कार व्हेन ही इज लाइक. सो एज लक वुड हैव इट, बस आया, 5 मिनट के अंदर बस आ गया, बट तब तक मैं बहुत दूर चला गया था. तो मेरा लक ऐसा ही था. सो आई सॉ इट लीव इन फ्रंट ऑफ माय आईज. वेल आई थॉट गॉन नहीं सिखाया था विद्यापीठ में एक बार कि बस ट्रेन लड़की एक जाती है दूसरी आती है, कि सौरभ सिखाया था, कोई तो ऐसा सिखाया था कि दिल्ली में कई बार हम लोग बस पकड़ते थे साथ में जब ये कर रहे थे. तो बस ट्रेन लड़की एक आती है दूसरी जाती है, तो बहुत कॉन्फिडेंस की एक तो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट विल कम एंड देन आई विल बी इन तेहरान इन नो टाइम. 6 PM तेहरान इज 2-3 hours अवे, सो कोई टेंशन नहीं हो रहा है. एंड माइंड यू हैव नो इंटरनेट, नो फोन कनेक्शन, भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई आदमी नहीं है, कोई दिख भी रहा है तो मुझे लगता है कि उसको इंग्लिश तो आती नहीं होगी. करते करते 8 साढ़े 8 बज गए. मैं इसी जगह पे हूँ जो जगह फोटो में देख रहा हूँ. अंधेरा हो चुका है. There's no way to hitch a ride. I've reached the road. Couple of cars and trucks they have passed, but for some reason they just did not stop. I had no idea what to do. किस डायरेक्शन में वॉक करे. But then there was an industrial area type का दूर में दिख रहा था. So around 2 kilometers, 2.5 kilometers I walked. When I reached there, of course it was closed. And there was this 50-year-old guy. देखते ही तुम्हें नफरत हो जाए ऐसा बंदा, एकदम दांत एकदम खराब से, देखने में एकदम इविल वाला लुक. मतलब अगर कोई हॉलीवुड मूवी हो तो उसमें मतलब विलेन वाला रोल मिले वैसा, वॉचमैन, केयर टेकर, संबूत काका टाइप्स बंदा था. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम और ये, बट उसको इंग्लिश एकदम नहीं आती. somehow I said कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदी तेहरान तेहरान करके उसको समझाने की कोशिश की. And cars were not stopping. So this was one of those times कि आदमी का मतलब ट्रस्ट खत्म हो गया ह्यूमैनिटी से. I'm like कि क्या हो रहा है ये, मतलब I'm not that usual trusting self of myself की. और वो बंदा एकदम evil, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि वो evil look है उसका. वो गया और किसी को फोन में फारसी में अपना कुछ कुछ बोलने लगा, लिटरली लाइक शाउटिंग समथिंग ऑन फोन. एकदम टेंशन में, एकदम मुझे डर लग गया. उसने मुझे पानी दिया था, बिस्किट्स दिए थे. I was worried that they might be spiked and all, and then I'll be done for. If I take that, they'll rob me. I'm just an easy target for him. No one around. दफना देगा तो पता भी नहीं चलेगा. इस टाइप्स का डर लग गया पूरा. 15 मिनट के बाद एकदम बड़ा सा बंदा on a rickety jeep comes out. ऐसी फट रही है. He bellows out, चलो जीप, मतलब ऐसा समझ कि जीप पे बैठो एकदम जोर से.
एंड देन डरते डरते जी पे बैठा कि अब तो हो गया. अब एक पहले से ईरान का एक इमेज होता है मेरे दिमाग में, मतलब जो कि एकदम गलत है, सॉरी, बट एंड आई वाज नर्वस, could not even say thank you or tashakkur to the other guy because I was like, ये तो tashakkur क्या बोलूं मैं, तो मुझे फंसा रहा है. It all happened so fast. But then this guy actually dropped me to Islam Sheher near Tehran, and from there I could take a taxi because you had taxis running to Tehran. It's part of Tehran only, it's a suburb. So, and I could not thank anyone, you know, and but what it did was it put back the trust I had lost, kind of, like, you know, that lost trust, it was back. Small incident, could have happened anywhere in the world, but again reminded me of the lesson which I told you, that kindness is inherent in humanity, and our biases are often, maybe not always, but mostly flawed. So this is my first question. Moving to the next one. No. Computer. So this is how the format would be. Okay, I'll give you the lesson and then an example. So my next story is from a family trip I did in Japan. For people who have been to Japan, they would know it is the most wholesome experience in the world. Every day is an adventure. Every moment is a revelation. I have been to Japan twice, once during this picture, like the cherry blossom, Sakura, and another during their autumn festival called Koyo, where everything turns yellow and red and green and red and orange and all. Both extremely beautiful times. Now, talking about the lesson, it is okay to get lost. Sometimes we say, yaar, जाएंगे भूल हो गए. जीवन में, travel में, दोनों जगह पे it's okay to get lost. And not talking about getting lost, I have got lost many times. In a solo glacier trek in Switzerland, I was the only one in the middle of glacier. I was jumping through glaciers. देखने में pictures में लगते हैं कि अरे एक ये जो gap बने हुए हैं ना, crevices, वो एक दूसरे के बगल में है. ऐसा नहीं है. You have to sometimes jump over them to be on the other crevice. It's slippery. So I've done that. I even made a last message video on one of my phones for people to look for when they find my body. You know, that kind of lost also have done. But I wanted to share something which was not that depressing. So this one is where I got lost with my family. It's less adventurous, but more about how getting lost sometimes helps. So it was November of 2016. We were on a 15-day trip to Japan during the Koyo season. Now Koyo season बहुत unpredictable है. It can rain, snow any day, despite weather forecast की sunny रहेगा. And I never travel with a trip company. You know, trip decide किसी make my trip takes, I never travel. The only place I have done that is when I visited North Korea, क्योंकि वो mandatory था. Everywhere else, even I'm with family, I plan the trip from scratch. हर trip के plan को मैं बोलता हूँ Bible. तो ये कुछ लोगों को मैंने शेयर भी किया था अपना कोई बाइबल, स्विस बाइबल और ये. So every trip के पहले I'm like very methodical. I make something called Bible. I put all my hotel reservations, itineraries, इस दिन क्या करेंगे, all directions, maps, printed, bound in a paper in my hand, also a soft copy. But as you know, our plans didn't always get derailed. Nature is not in our hands. So one of these days, the day started with heavy rains. So we decided to cancel our trip to a beach and temple town called Kamakura. ये कामाकुरा नाम की जगह थी साउथ ऑफ टोक्यो. तो हमने बाइबल के हिसाब से उस दिन जाना था कामाकुरा, बट हमने बोला कि आप नहीं जाएंगे, सुबह सुबह बारिश हो रही है. बट नून होते होते वेदर वाज सनी अगेन. सो मैंने बोला कि यार बाइबल है, बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे होगा. So we decided to go ahead with our plan in the Bible. So our Bible was planned for a full day, but now the trip is only half a day. So I still decided to stretch it. We reached Kamakura late afternoon, and to save time, I decided to take a shortcut through a mountainous trail which comes from the station towards a temple called Hachimangu. This is the temple Hachimangu. So sticking to our travel plan, the Bible, we were targeting to reach this awesome, beautiful temple called Hachimangu. और ये image जो आप देख रहे हो, it's not from my pictures. It's from Google, because as you would have guessed it, I never reached here. You know, well, simply put, I got lost during that trail in the mountains. So there were few people when we had started. Soon there was none, like no one was there. Luckily, ये ईरान नहीं था, so we knew that if we will be able to get out. So sometimes when you get lost, this feeling कि हाँ कोई बचा लेगा या किसी तरह से बच जाओगे, that is important. That will only get, it's only then you will realize कि lost होने में कोई खराबी नहीं है. So
through the foliage, we reached a remote temple with no one around. This temple is called Hasadera temple. Koi nahi tha. The ethereal feeling bolte hain na, of being in a remote, much smaller temple was a welcome change. उस trip में हम लोग कितने temples देख लिए थे, right? Tokyo, Kyoto, यही कामाकुरा वगैरह जो भी है, सारा temples हमने देखा हुआ था. So एक छोटी temple में जहाँ सिर्फ हम लोग हैं, that was very unique. So we left a small prayer note there, and this moment, away from my Bible, away from my plans, was the best moment in our entire Japan trip. And Japan, we did so many things, but when we think about that, we think about just being there alone and writing this message on a small board which was kept there and hanging it there for, I don't know, eternity. And my son does not remember this, or maybe he does not understand this feeling. But that day, me and my wife, we learned a lesson for life, not to give up on hope when you're lost in travel, but more importantly in life, when you're lost, don't give up on hope, because maybe jo agla turn aayega na in your lost life, it will be more beautiful than ever. So that's my lesson number 2. The third one is lesson number 3, very simple and something which many of you who have lived outside of India would relate to. We often mix politics with people, and that is what causes misunderstanding. So before going to the whole story and what I want to share, let me start with a picture from my son's pre-pandemic class 2020 Dubai. So here you see kids from 9 different countries. This is my son here, the tiger in the front, or whatever it is, bear. And this is Yusuf, it's his best friend. His parents are from Karachi. My son can also speak a bit of Mandarin because uska Chinese neighbor hai, uska beta is Sean. He's his best friend. So, does my child know that they are from Pakistan and China? Countries we usually talk bad about on our family WhatsApp groups and forwards and news debates. Well, he kind of does. He knows. But does he judge them an iota for that reason? He doesn't. And the same applies to those kids. I don't think Yusuf or Shuan ये भी कुछ इनको भी शायद पता होगा कि इंडिया क्या है क्या नहीं है, उनको होता है उनके घर में कोई बात करता हो. But do they judge Adyanth for that? I don't think so. Boundaries are man-made. When I think of India, I don't think of India as the geographical map. I truly respect कि हम लोग उस geographical map को protect कर रहे हैं, हमारे soldiers उसके लिए fight कर रहे हैं, Chase is there. Like, I totally understand कि वो geographical map is important. But when I think of India, I don't think of that map. I think of the very culture, what as Indian hum signify karte hain. That map is necessary, but we are more than that map. And my biggest lesson from my travels has been to appreciate that what you see in media about a country is not a true reflection of the actual sentiments of its citizens. So I've been to some of the most hated countries: Iran, Cuba, Syria, Yemen, Israel, China, North Korea, sab gaya hu main. And I've lived in really multicultural places, Dubai, Singapore, and even Toronto. It's amazing. And some of you who would have been in similar places would know, media jo dikhati hai, wo exaggerated hi nahi hai, wo completely opposite hai of what the place and its people are like. So my next story in this lesson is about Muhammad Ali. Well, not this one, but this one. When I had moved to Dubai, I had carried some of my biases with me, like hard to believe for me now, but my impression was that Pakistanis hate India, and in Pakistan ke har koi itna biased hoga, itna kharab hoga, unke sath unko wo apne ko bas justify karenge and all that. So while I've had tons of Pakistani friends since then, and some of them have been that way, like justifying and all that, ki nahi hum to ye jeete the, hum to wo hare the and all that, but Muhammad was the first one to change my perception, and a lot of them, and thereafter a lot of people have changed that perception. But so Muhammad is from Pakistani side of Hamara Kashmir. He's from Mirpur in Kashmir. Travel enthusiast. We have a small Facebook page that we run together where we share where we travel and to the rest of the world. And he was also our neighbor. So stories from February 2015. I barely knew Muhammad, just namaste, salam in corridors of our society. So due to my job, I'm on road most of the times, like 3 weeks, 2 weeks, a month is very common for me to be on road. So I was on one of those trips in Kuwait. My wife was in her office and my mom was visiting. So she was in Dubai. और मैं mom से ही बात कर रहा हूँ phone पे, और वो trip कर गई door के ledge पे and fell down. और दर्द से चिल्ला रही है और मैं phone पे हूँ कुवैत में, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एकदम
2015 है, जस्ट नया दुबई गया हूँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि क्या करना है, किसको कुछ करना है. मेरे दिमाग में बस पहले आया कि आफ्टर फ्यू सेकंड्स आई डिसाइडेड टू कॉल मोहम्मद, कि hoping he has not left for his office. He picked up my call, rushed to my mom, and then just said, hang up bhai, she is fine, I'll take care. और बोला तुम रखो फोन. मैंने रख दिया. I didn't know this man very well back then, but the way he said it was strangely reassured and kept my phone back. After half an hour I call him back. Till then he had carried Ma to hospital, got x-ray done, fracture tha, pay kiya, medical bill, wo sling purchase kar diya. All in all, did everything that I should have done as a son, you know. And when you don't have insurance in Dubai, the cost for medical care is astronomical, you know. After us back, when I tried to pay him back, he simply told ki, yaar, it will not, I'll not, main nahi lunga ye paisa, it's haram. So all my life till then, I thought halal, haram were just some rules set by a book. It was only then that I linked this with moral implications. हलाल मोरल है, हराम मोरल है, ये पहली बार समझ में आया. उसने बोला कि मैं पैसे तो लूंगा ही नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मैं पैसे ले लिया तो ये हराम है मेरे लिए. और that is how things are so subjective, right? हम हराम हलाल कुछ और सोचते थे, पर मैं सोचता था कुछ और at least. And just like me, my mom was also a biased person. When we were kids, घर में कोई आते थे अंसारी अंकल, तो उनके लिए अलग set of plate and cutlery होता था. तो needless to say, this incident changed her as well. And if, like in a future visit, actually Muhammad took her to वहां पर दुबई में टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, सो ही टुक हर टू दुबई टेम्पल फॉर शिवरात्रि. वहां बाहर वेट किया, उनको दर्शन करने तक उसको पिक किया. सो एंड यू नो, एंड नेवर रेज्ड दिस अप डिस्पाइट बीइंग अ रिलीजियस एंड डिवोट मुस्लिम, यू नो. सो व्हेन आई आस्क्ड माय मॉम कि हाउ वाज इट टू बी टेकन टू अ टेम्पल बाय अ मुस्लिम, माय बायस्ड बिहारी मॉम बोली, व्हेन ही डिडंट जज मी फॉर माय बिलीव्स, हु एम आई टू जज हिम? एंड that's what travel and meeting people. So travel is not just about going to a new place, it's about meeting people, right? And that's what it does. And that is the essence of my third lesson. People are not defined by the politics of that country. Coming to the fourth one, yeah, it's ongoing. We have 7 to fill. I could have taken 5, but somehow I decided that 70 ke sath 7 match karta hai. So fourth one, very simple one actually. So many of us, you know, we get almost all our demographic and geographical information from movies. While it's common to shoot in a different city and pass it on as another, like you might have seen एक मूवी है कंटाजियन, उसमें बिग बेन पीछे दिख रहा है, ये बोल रहे हैं मिनियापोलिस, लिख रहे हैं उसके सामने मिनियापोलिस, और पीछे में छोटा सा बिग बेन दिख रहा है, तो यू नो दैट इट्स बीइंग शॉट इन लंदन. माया बीच है, ये जो पिक्चर है माया बीच का है. पीपल हु हैव वॉच्ड द मूवी बीच, उनके दिमाग में आता है कि यार एकदम सीरीन सा, एकदम दुनिया में कोई नहीं रहता होगा वहां पर, वैसा बीच है, वहां जाओ तो भीड़ क्या फेंचता, आप खोजते हो कि कहां पर से आप फोटो अपना इंस्टाग्राम क्लिक हो जाओगे. I've been to many of those Game of Thrones locations, Morocco, Croatia. I love the way they fictionalized real locations. So एक big issue है when you have traveled so much कि आपके eyes बहुत keen हो जाते हैं. You spot these mistakes very easily. अरे ये देख के शिकागो लग रहा है, ये फिलाडेल्फिया क्यों बोल रहे हैं टाइप से. And you don't mind that slight discomfort. So I'm not talking about that. I'm talking about when an entire country and its people are put in poor taste. So this segment is about a country called Kazakhstan. So a country I had known only from the movie Borat. So जब मैंने Borat movie देखा था, अच्छा ये Kazakhstan है. And it's my fault. I know some people would be like, कैसे तुमने सोचा, ये तो देख के ही लग रहा है कि कोई Eastern European country है. But somehow, like उस समय दिमाग में नहीं आया Kazakhstan ऐसा होता है, ये मैंने मन में सोच लिया. So I do get that the movie was not supposed to be taken seriously. It's still a matter of debate कि ये movie intentionally racist थी कि नहीं थी. But एक बार जब opportunity मिली कि जब कजाकिस्तान जाना है, तो I half expected the place to either look like the setting, you know, in this Borat wala setting. So when I reached there, I was actually amazed by Kazakhstan. Both Astana and Almaty are amazing cities, mind-blowing architecture, great infrastructure, nice malls, restaurants, close to nature. Few hours drive and you are in the middle of beautiful nature, and some of the friendliest people there. Apart from the terrible taste of horse milk, जो तुमको जगह जगह पिलाएंगे तुमको horse milk, horse meat, you know, I just loved Kazakhstan, and I would request everyone to put back their biases based on Hollywood or Bollywood movies, and you know, travel to these places which might not be as what it is. So this was nothing like Borat, and a lesson that Hollywood movies are not the best geography teacher. Coming to the end now, 3 more remaining. The 5th one is again, I would request you to hear me very carefully.
So it's like traveling definitely makes you smarter, right? And as you travel more and more, you begin to notice things beyond the travel pamphlets and hearsay. So each cultural trait has advantages and disadvantages. And the more extreme the cultural trait, the more extreme the advantages and disadvantages. So therefore, it is often the most apparent and obvious aspect of each country's culture. That particular cultural trait becomes the obvious aspect of that culture, country's culture. And that becomes the best part of it and the worst part of it that way as well. So I'll give you an example from a place I've not visited. So in Brazil, they use the word jeito, which means Brazilian way of living. So it is this Brazilian way of living that gives Brazilian the relaxed and fun attitude, हर चीज को एकदम easy लेने का attitude, जो कि हम foreigners को बहुत अच्छा ब्राजील जाएंगे तो पार्टी करेंगे, right? ब्राजील जैसा vacation तो हो ही नहीं सकता. But this same jeito is the reason why Brazil as a country is a mess, right? Nothing works the way it's supposed to. The government is completely corrupt. Infrastructure is still in its 60s, 70s. And so this jeito, which makes these people enjoy life, is the same reason why they have corruption. And the same can be said for, say, Japan में polite होते हैं लोग. वही उनकी अच्छाई भी है, वही उनकी बुराई भी है, वो polite होना. रशिया के लोग blunt होते हैं, वही उनकी अच्छाई भी है, वही उनकी बुराई भी है. जर्मन में लोग orderly होते हैं, अमेरिका के लोग consumerist होते हैं, consumerism है वहां पर. So these are both best and worst things about these countries. And when you take on one, and that's what you realize, this is a lesson I'm trying to say, you must be prepared and willing to take on the other. India का example देता हूं, the picture which I put in the lesson part, it's Indian जुगाड़, right? India का जुगाड़ को लोग बोलते हैं कि यार, that is India का most interesting or innovative cultural aspect. It's amazing. Jugaad is amazing because it helps Indians innovate, be creative, and solve problems. But the same crafty, thrifty jugaad जो हम करते हैं, it limits our ability to find permanent solutions. हम हर चीज temporary करते हैं. And as a country, we have a mindset to take shortcuts. So वही जुगाड़ जो हमारी सबसे अच्छी चीज है, जो हमें innovative बनाती है, वही हमारी सबसे खराब चीज भी है, क्योंकि वो हमें shortcut लेने को मजबूर करती है. And since I have not been to Brazil, I'll give you an example from Singapore, a country I love and also hate at times. So it was one of the first countries outside the subcontinent that I had traveled to, and I've traveled there multiple times now. So history सबको पता ही होगा, फिर भी just a brief कि सिंगापुर एक छोटा सा island है मलेशियन पेनिनसुला में. मलेशिया ने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए सिंगापुर. तो उसके लीडर्स को वो दुख भी हुआ, मतलब कि अरे मुझे क्यों नहीं ले रहे हो, मुझे मलेशिया का पार्ट होना है. उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम मोस्टली चाइनीज हो, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुका है वर्ल्ड वॉर में, हमें नहीं चाहिए. So impoverished, uneducated, sparsely populated, no natural resource. Singapore's new leaders, they understood that in order to survive, they would have to act fast and find a way to make this island, indispensable to the global community. So बहुत शुरू से ही the government started to put an almost maniacal emphasis on education, commerce, financial success, and they generated a culture built around, rapid economic growth. A metropolis was soon built specifically to, cater to foreign investors, bankers, trade. Disneyland एकदम foreigners के लिए Disneyland बना दिया उन्होंने, and जिसके पास पैसा है आओ, पैसा और फिर वापस कभी मत जाओ, ऐसा. Today, Singapore is one of the richest countries in the world. I really love the place. The island is more or less devoid of crime and poverty. And when you visit Singapore, लगेगा जैसे future में आए हो ऐसा. मतलब Manhattan शायद ऐसा बनेगा future में. Spotless है, एकदम perfect है, modern है. But this appearance of perfection comes at a cost. The country is soulless. And I'm being very honest. It's literally soulless. कोई soul नहीं है, कोई identity नहीं है. It's very nice. It's very beautiful. As a tourist, as someone, a resident, you totally enjoy it. But there's no history, no identity, no deeper values, no deeper respect for individuals beyond money and productivity. Malls are there. There are fines for everything. You go there, they say Singapore is a fine city law. That's the term they use, which basically means कि हर चीज के लिए फाइन है वहां पर. ठीक है, कुछ भी करोगे डर के रहोगे क्योंकि फाइन है. Everything is designed and catered for financial gain. And so ironically, what is most impressive and admirable about Singapore is also what is most depressing about it. And it was so given by necessity to become financially indispensable to the global community that it sacrificed its cultural identity in the process. So that's my lesson from Singapore. कि भाई
जो कंट्री की एक अच्छी चीज है वही उसकी बुरी चीज भी है, तो दोनों के लिए तैयार रहो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है सिंगापुर या अच्छा सिंगापुर, दैट्स नॉट माय लेसन। लेसन इज कि सेम चीज जो उसके लिए अच्छी जो लग रही है उसमें तुम डीप डाइव करोगे तो वही चीज उसकी सबसे खराब चीज भी है, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, चिरेता के साथ उसको कटक जाना है। Don't worry about time. We are now near the end now. It's the 6th one. So another important lesson that I have learned from my traveling is to get a better view, you need to sweat and climb. ठीक है, और क्या है मैं बताना चाहूंगा धीरे धीरे. So you have, when you usually get the best view when you have put in a lot of sweat to get to that. And as I mentioned, I love trekking. Whichever city I am in, I make it a point to trek. जब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें था तो कई बार मैं पिक्चर्स भी भेजता था और वीडियोस भी कि भाई मैं आज यहाँ खो गया हूँ, आज वहाँ खो गया हूँ. इन प्लेसेस वेयर दे हैव केबल कार्स और स्की लिफ्ट, मैं बोलता हूँ मैं नहीं लूंगा केबल कार, वो 20 यूरो तो बचेंगे ही, 20-25 यूरो. आई also trek that particular place. So I've trekked across multiple countries. I have and always have been reminded that endurance is a psychological thing, not physical. I'm not a very fit guy. I'm not a trekker as such, like proper wala, but it always is your mind rather than your body, which is helping you endure. So this segment, I could have taken example from any country, but I decided to opt for this beautiful place called Montserrat. It's a beautiful rocky hill close to Spain. अगर आपने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा देखा है तो यहीं पर फरहान ऋतिक का फोन फेंक देता है और फिर ये लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं and all that, and पीछे भी बहुत खूबसूरत सा व्यू रहता है. They always choose those places, right? So this is Montserrat. So I was visiting this place. There's a nice church at the base of the mountain, this one here, and I was not dressed to trek because मैं ट्रैक के लिए गया ही नहीं था. So I just wanted to show off. ये हमारा WhatsApp ग्रुप था विद्यापीठ का, मैंने सोचा कि शो ऑफ करते कि मैं कितने एक्सोटिक जगह पे गया हूँ. बार्सिलोना ट्रिप, यू माइट रिमेंबर द वन, मैं पूरा शो ऑफ कर रहा था, हर दिन 15 दिन तक था वहां पर. सो आई डिसाइडेड टू चैलेंज माई सेल्फ, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ट्राम कार टू मिडवे टू द टॉप, I decided to stretch myself and climb the whole bit through the forests and winding roads. So 3 hours का trek बोलते हैं इसको. And during this lonely path, occasional returning trekkers मिलेंगे. ओला 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 बोलते रहते, काफी वेलकमिंग पीपल हैं स्पेन के, वो लोग हमेशा ओला बोलते हैं तुमको, एंड दे ऑलवेज encourage you, offer you water. So it's not a very discomforting trip. I was foolish though to have underestimated this place. I thought it would just take me half an hour, 1 hour, but every turn I take, summit लग रहा है बहुत दूर है, मतलब हर टर्न ले रहा हूँ मैं, बोला कि अब तो हो गया यार, अब और ऊपर जाना है. And my mind is saying कि 2 hours down the trek, views are, this is the picture when it's 2 hours down the trek. I was like कि view तो amazing मिल रहा है, सब कुछ दिख ही रहा है. My mind is saying कि go back, हो गया, अब लौट जाओ, मिल गया ना view, अब जाओ. But just like all the trekkers in you, they would realize this happens all the time. 50% of us return at that moment. We have our Instagram picture, WhatsApp picture, halfway up. We are like कि अब क्या और इससे अच्छा क्या व्यू मिलेगा, क्यों जाना अब और इतना मेहनत करके, what लगी हुई है. It is during these times that you need to push yourself further, and you sometimes need a trigger to extend beyond your mental and physical boundaries. In my case, the trigger was a 70-80-year-old couple था, वापस लौट रहा था, बहुत मुझे देखा स्वेटी है, टायर्ड है, उसने मुझे बोला ओला, और फिर बोला बहुत ही मजेदार, it's simply wonderful up there. And that's when that trigger worked. Instead of giving up, I pushed myself further. After an hour more, I reached Mount Geroni, 2,500 meter above sea level, not so high, but highest in the region. And needless to say, I was looking funny in my red shorts, blue sneakers, but the smile on my face is genuine. It's the reflection of the sense of achievement I felt. I fleetingly thought about the Aayush from an hour ago, who was about to give up on this feeling, and learned my lesson, which I have stuck to, not just in trekking as well as in life. Stretch yourself one last time. When you think it is done, it's enough, look around for triggers like what I did. And every time you have a feeling I have done enough, those triggers will help you say, thoda aur, and you can get a better view. And the sense of accomplishment of midway ka better view and this view is way different. So that's the lesson for life. Always sweat a little bit more to get on the top. And finally, the lesson number 7. Now, this is a view which might sound like a crowd-pleasing final lesson. अरे नेवी का बंदा अपने इस कॉल पे है, उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं. नहीं, so कि मूवी तो पूरा
कैसा भी गया मेरा प्रेजेंटेशन, क्लाइमेक्स इतना अपीजिंग हो कि लोग बोले कि यार इसने इंडिया की बड़ाई की, बड़ा देशभक्त सा बंदा है, एनआरआई है लेकिन क्या हुआ, देशभक्त है, एक कंट्री के बारे में बात कर रहा है. But that's not my motive. I purposefully put that lesson. Truly candid, this lesson is not like a blind patriotism from a place, from a person who is living in Canada, seeking a new passport, which I bluntly declared कि मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ. The view is the result of what I have seen across my travels. In nearly every city I come across, I meet Indians of all levels, executive, professionals at my levels, migrant laborers, truckers, and whatnot. And it just amazes me and makes me so proud as an Indian how great we are as a nation and as an individual representing that nation. I don't know, Gon, तुमने बोला था कि विष्णु ने बोला था कि if you are brown in UK, being Indian is the best brown to be. I'll take it a little bit further. Regardless of any color, being Indian is the best ethnicity to be. It may sound cliche, it may sound कि भाई कुछ ज्यादा देशभक्ति कर रहे हैं, but we do grow as Indians, we do grow with incredible values instilled in us from very early age. It may seem diabolical, but our movies with its songs and dance and happy endings, they make us replete with hope and positivity up in our sleeves. It might seem ironical, but the very differences and biases that we grow up watching, they help us assimilate with the world when we are out of our country. We grow up with these biases. Racism, बाकी क्या करेगा? इंडिया में भर के racism. But that prepares us to be more ready to take on the world. The spiciness of our food makes it tastier, right? The alap in our songs makes it more musical. हमारे जो colorful weddings होते हैं, जितने colorful उतने हमारे marriages stronger होते हैं. So the louder we are as Indians, the better we are. And it is entirely my view, but being Indian at any level helps us be expressive, assertive, humble, grounded, and well prepared to rule the world. And that's why it's not CEOs है वहां पर. CEOs जो देख रहे हो वो इसलिए नहीं है कि वो वहां के कॉलेज से पढ़ के CEO बन गए हैं, ऐसा नहीं है. यूएस में गए और कॉलेज सिर्फ उसलिए नहीं है. ऑफ कोर्स वो इट्स बिकॉज कि हम लोग रियली में ग्राउंडेड भी हैं और साथ में असर्टिव भी हैं. एंड दैट आई सी are all around, like when I meet people. And while this means we sometimes, because we are so humble and grounded, we sometimes get satisfied with what professional growth or what money we are earning. Sometimes we are like, ho gaya bhai, bahut kamal liya, which might not be to our full potential. I'm certain most Indians are living a happier life than most other countries. So in this lesson, I also want to put a small quote from Swamiji from over 100 years ago, during his Parivrajak times when he was a traveling monk in India and then in outside India. He said, we must travel. So all of you who have not traveled, if there is someone in the call who has not traveled, young guys there, we must travel. So ye main nahi bol rahi, Swamiji bol rahe hain, we must go to foreign parts. We must see how the engine of society works in other countries and keep free and open communication with what is going on in the minds of other nations. एकदम ऐसा नहीं है कि उनकी तरह बन जाना, ये नहीं बोल रहे वो बोल रहे हैं कि फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन करो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ अदर नेशंस. Only then we'll be a great nation again. If we really want to be a nation again, this is what we have to do. We have to travel. Back then, traveling out of the country means कि वो दक्षिणेश्वर में, मतलब स्वामी जी कभी फिर दक्षिणेश्वर नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर वो फॉरेन होके आए थे, सो कॉल्ड अपवित्र हो गए थे. सोचो उनका कितना क्लोज कनेक्शन था उस जगह से. समाधि सब वहीं पर हुआ, राइट? मतलब महासमाधि का जो पहला एक्सपीरियंस था एंड ऑल दैट, जो भी बोलते हैं उसको, जो समाधि लेके पड़े. तो बट पॉइंट इज, इतना क्लोज वहां पर अपने गुरु से मिले, बट ही कुड नॉट एवर गो टू दक्षिणेश्वर डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट. ही डिसाइडेड टू गो टू US and see different countries and experience different countries. And if you read books about his travel, it was not just US. During the travel, he stops in Sri Lanka and Japan and in China, and everywhere he has some great experience that enhances his worldview, that changes him as a person. And that's why Swamiji became Swamiji, right? So just remember, just because we have left school, now we are big bosses in our companies, some of us are retired, right? It does not mean our education stops. Learning keeps us young, and travel is one of the greatest teachers of all. Travel sense of wonder deta hai, discovery deta hai. There's an entire world of things to do and people to meet. And I'm not saying by travel go to bhai jo 67 countries jana padega itna gyan marne ke liye. Nahi, aisa nahi hai. You could explore a forest near your home. You can walk down to a new street, try a different cuisine, learn about another culture. Apne neighbor se mil lo. Ye bhi hai travel.
So that's where you stop, you start learning and, jump out of your cubicle और क्यूबा पहुंचोगे, मतलब उस टाइप से. So अपने क्यूबिकल की दुनिया से बाहर निकलो और देखो दुनिया को. I took this picture in Japan, and why it's special is it keeps reminding me कि एक single type of tree था, but had different colors, and helps me remember to continue experience the wonders of the world. So that is it. Thank you everyone. Enough of monologue. Now proper adda shuru karte hain, and I would love to take questions if you have anything which you would like to know. नहीं आयुष, पुष्पेंद्र here, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम जो जापान का फोटो दिखा है और वो सब, your kid was too small. Yeah. Is even your wife, अभी तुम इतने छोटे बच्चे को कभी अनटाइमली भूख लग जाती होगी, उसको उतना ये नहीं होगा, तो how did you manage all the stuffs that I think that would be a biggest challenge as a parents, Right. क्योंकि तो how वो तुम मैनेज कैसे करते थे? हाँ, वो तुम्हारे बाइबल में प्लान होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था. वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज हमने बाइबल में कई बार मेंशन भी किया है, राइट? तो मैं बताता हूँ. सो देयर इज दिस एक गोल्डन एज है बिगिनिंग में. बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बस प्रैम में सुला दो, आधे समय सोते रहते हैं. उस टाइम में तुम जितना घूम रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रह सकते हो, ठीक है? बस उसके मिल्क का अरेंजमेंट होना चाहिए, बेसिक फूड का अपने साथ में कैरी करो. बट जो ये फेज है ना, 3 से लेकर 6-7 तक, जब वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, वो ज्यादा मुश्किल फेज है, बिकॉज उनके हिसाब से आपको अपना आइटिनरी बनाना पड़ता है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, whenever we travel, we always booked Airbnbs. ये होटल का लालच ही छोड़ दिया हमने. Airbnbs क्यों लिया? क्योंकि साथ में हमारे वहां पर किचन रहता था, एंड we have a small plastic का बॉक्स हमने IKEA या कहीं से खरीदा था, where you can put salt in one, some kinds of masalas in one, things like this. और हम Airbnb में कई बार अंडा लेके आते हैं, अंडा करी बना के खा लेते हैं बच्चे के हिसाब से. कई बार वापस आ गए, कुछ ट्रिप किया, वापस आए, कुछ खाया, खाना पिलाया. That gives us so much flexibility. So पहले तो don't stop from traveling. बच्चे के एज केयर में ये मत सोचो अरे बच्चा तो समझेगा ही नहीं. पहले तो सब चीज समझता है वो. My son might not remember China, might not remember Japan, but when he sees those pictures, he feels that he has traveled the world. He feels that accomplishment that he has had. So भले ही उसको याद नहीं रहेगा बहुत कुछ, it still has added to his personality, it still has added to his learning and experiences. So बिल्कुल ट्रैवल करो, एंड कोशिश करो कि हाँ, अपनी प्लानिंग ऐसे करो कि बच्चे को खाना मिलते रहे. इफ दे आर वेल फेड, नथिंग बेटर देन दैट. जापान जाओ तो एक दिन का ट्रिप डिज्नीलैंड का कर लो, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये उसका भी ट्रिप है. अगर स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो एक दिन बस बगल में कोई पार्क वार्क या स्लाइड्स होते हैं, उनके बहुत अच्छे होते हैं, वहां घुमा दो. मतलब बेसिकली माय पॉइंट बीइंग कि like include everyone in the family and don't hesitate to take them, even though they might not remember some of it. They would still learn a lot from that experience. Okay, thanks. Hi, Aayush, Ritesh here. सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है. बस टॉप शेयर कर दो ताकि जो चेहरे भी दिखते रहे. हाँ, तो आयुष, तुम्हारे ट्रैवल सुन के कुछ मुझे पॉइंट्स याद आया. इट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट आई एम श्योर यू मे हैव डन योर रिसर्च और नोटिस्ड, एंड आई आल्सो मेड सम नोट्स ऑन योर ट्रैवल. तुम कौम गए थे ना ईरान में? हाँ जी. हाँ. तो तुमको तो पता होगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस मशियास, यू नो. तो तुम वो फातिमा मासूमे मॉस्क में गए थे क्या, जो तुमने मॉस्क? हाँ, उसमें भी गया हूँ. अच्छा. हाँ. तो वही, दिस इज फॉर द अदर पीपल, परहैप्स मैनी ऑफ अस नो. तो तुमने जो स्ट्रक्चर दिखाया ना, हनी कुम लाइक स्ट्रक्चर, जो काफी मॉस्क में होते हैं, तो यू विल नोटिस इट. उसको मुकारना कहते हैं, मुकारना मतलब अरेबिक में. तो पर्टिकुलरली तुम अगर ग्रेनाडा गए होगे, और ईरान में भी काफी मॉस्क में है, तो वो आर्किटेक्चरल स्टाइल है. बेसिकली उसका दो फंक्शन है, एक तो सपोर्टिंग फंक्शन है, और दूसरा इट इवॉल्व्ड इनटू अ ब्यूटीफुल architectural type. So when you enter a mosque, it feels like, it gives you a feeling of waterfall or a staircase to heaven. So particularly अगर लोग travel करेंगे, इंडिया में ये architectural style इतना common नहीं है.
बट ग्रानादा, ईरान से फिर जब because for 800 साल साउथ ऑफ स्पेन अंडालुसिया वाज अंडर मुस्लिम रूल, तो अगर वहां जाओगे तो वहां का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है. तो आई डोंट नो वेदर यू हैव ट्रेवल्ड. एंड कॉम का एक और है, ईरान का वन ऑफ द स्पेस सेंटर्स इज बेस्ड देयर, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है. वहां पर मिसाइल वही काफी चेक्स होते रहते हैं. और देन यू टॉक आई अबाउट थिंक एक रिफाइनरी भी है ना, बहुत बड़ा रिफाइनरी भी है, मुझे याद है. उसमें आग जलती रहती थी ऊपर में. एक रिफाइनरी के बारे में. नेचुरल गैस की रिफाइनरी. अच्छा. और वो लोग कुछ और बोलते हैं ना, उसको घॉम बोलते हैं. घॉम गांव. और क्योंकि मुझे ये सिटी फर्स्ट टाइम क्यों व्हेन वी वर टॉकिंग, मुझे कब याद आया था, सलमान रश्दी पर जब फतवा जारी हुआ था ना, so it was fatwa from Com because it's the religious center. So at that time मैं क्लास 9 में था या 10 में था विद्यापीठ पे. तो हम उस समय न्यूज़पेपर होता था, इंटरनेट नहीं होता था. तो we read about this news that there is a fatwa on Salman Rushdie from Com. I said, ये कहाँ पर जगह ईरान में? Then this place always intrigued me, but when you referred it to me, it's those memories came back. And one of the very good memories, which I think my favorite place is Montserrat. it's if people would like to travel, Barcelona जाते हैं तो ठीक है, वहाँ से बस और ट्रेन मिलेंगे. So those mountains you are showed are Needle Mountains. तो वहाँ पर शायद तुमने नोटिस किया होगा, it's one of the places which has black Madonna. Generally for other people, आप लोग चर्च या कहीं जाएंगे तो मैडोना को व्हाइट दिखाते हैं या ब्राउनिश, but few places in the world they have depicted Madonna as black. So Montserrat is one of the places where people go for, अगर तुमको कुछ विश है दिमाग में, तो you go and see the black Madonna. And among जो तुमने वो फोटो दिखाया ना आयुष, जो monastery का, तो the most during Franco's time, Spain के time में, he was so-called socialist and didn't believe in God. So वहाँ पर काफी जो monks थे, they were not entertained. They were kind of imprisoned there. So, and those monks have a beautiful collection, one of the very beautiful collection of private art. तो डाली वाली का भी art उनके collection में. अधिक नहीं है, 300 या 250-300 pieces होंगे. But if someone goes to Barcelona, make sure कि वो Black Madonna और art collection देखे. लास्ट का जो ने स्लाइड दिखाया स्वामी जी का, very beautiful. इनफैक्ट स्वामी अभी हमारा रीयूनियन हुआ था विद्यापीठ का, हमने दिसंबर में पेरिस में ऑर्गेनाइज किया था. तो पेरिस में रामकृष्ण मिशन का बहुत बढ़िया आश्रम है, करीब 100 साल होने आया उसको. सो इफ समवन कम्स टू लाइक इन फ्यूचर टू ट्रैवल टू पेरिस, मेक श्योर दे गो टू दैट आश्रम. इनफैक्ट यू कैन स्टे इन दैट आश्रम. वेरी बेसिक फैसिलिटी है विद्यापीठ जैसा. तुमको 40 यूरो में तुम दिन में रह सकते हो. तुमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है. You attend the aarti and also you help in the kitchen there. जो सफाई होता है ना, like in return as a show to gratitude, you help in the kitchen. And जब स्वामी जी पेरिस में थे तो वहाँ पर 3-4 एड्रेस में रहे थे. So तुम जब रामकृष्ण मिशन के आश्रम में जाओगे तो they give you one pamphlet where there's Swami Ji in Paris. So if someone is really interested, they can go to those addresses and see Swami Ji. But I just shared while you were speaking, there are so many common things. I'm sure other people have to, but thanks for, and last one, Kamakura तुम गए थे, तो हमारे लक्समबर्ग में एक जापानीज रेस्टोरेंट मिशेलिन स्टार, उसका नाम कामाकुरा है. तो मैं हमेशा ट्रैवल करता था, तो मुझे समझ में कभी-कभी दिमाग में क्वेश्चन होता है, but you don't look for the answers. It's always there. So now this presentation answered why is Kamakura, because it's after that the city is south of Tokyo. Yeah. But thanks very much. That's from my side. Thank you so much. And I like आपने तो काफी ट्रैवल भी किया हुआ है, आपका भी मुझे इनसाइट्स. It's lovely to hear from you. So, thank you so much, Riteshna. बस I think then there are no questions. So no, आयुष एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये तो मतलब मस्त था प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस भी मस्त था. तो and we have shared long like all these stories earlier as well. तो तुम लास्ट प्रेजेंटेशन जो था स्वामी जी का वो छोड़ के
what other thing, like how RKM Devghar helped you to go through this journey of 70 countries? Like क्योंकि जैसे तुम अभी अपना बच्चा का भी मेंशन किया कि तुम्हारा लाइक तुम उसको हेल्प करते हो ट्रैवल में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम लोग का तो बचपन आरकेएम ही है, तो how did that help you to structure all this over the period? लिखा है ना पार्ट ए पार्ट A बी। sense of intrigue and travel तो हम लोग का आरकेएम से ही आ गया था, राइट? जो हम लोग का क्लास ट्रिप्स होते थे, even though it was like to a close by place like Rikhya या फिर all Ramakrishna related stuff, that sense of travel and that sense of adventure, I think RKM has instilled in us. I think abhi bhi when we think of those travels, that's where our ethos for travel has actually stemmed from, right? So definitely that. Plus, many a times when you travel, like you have traveled to Dubai, for instance, you have friends there, you know, और वो एक कनेक्शन बन जाता है, वो ट्रैवल अलग है, राइट? वो दुबई तुम बाद में भी गए होगे, हो सकता है पहले भी गए होगे, बट विद एक फ्रेंड्स, एक आरकेएम फीलिंग के साथ ट्रैवल करना, दैट्स सो मच डिफरेंट, राइट? वो मुझे भी, मैं दुबई में रहा 8 साल, बट मुझे वो लगता है कि मैंने दुबई घूमा तुम ही लोग के साथ. मतलब that's how it is, right? That's the kind of brotherhood we develop and as Vidyapith guys. और जब भी ट्रैवल करते हैं, आई थिंक दैट कनेक्शन इज देयर. अभी मैं कुछ दिन पहले भोजन से बात कर रहा था, he has shifted to a nice place called PI. मैंने एक सेकंड नहीं हेसिटेट किया, मैंने बोला कि अच्छा तुम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, मैं आ रहा हूँ, मतलब टाइप्स. बिकॉज ये अगेन विद्यापीठ की तरफ से कि यू, आप बाकी लोग के भी स्कूल फ्रेंड्स होते होंगे, बाकी लोग के भी कॉलेज फ्रेंड्स होते होंगे, बट द काइंड ऑफ लाइक ब्रदरहुड वाला फीलिंग है ना, तो you are more eager to say yes to things, you're more eager to experience new things, jump karne, you can jump to different like way, basically that's the whole thing, which I think because of Vidyapith, that travel has made things easier for me. Also a small incident I would like to share. Singapore में मैं एक बार था, तो मेरा एक friend, he was caught for shoplifting. वो कोई एक मुस्तफा करके शॉप था, उसमें उसने एक परफ्यूम वगैरह अपने बैग में डाल दिया था. अब वो गया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई वहां पर. अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं, कैसे, हाउ कैन आई हेल्प. तो मैंने शंकु को कॉल किया कि 10-11 बजे रात के थे, मैंने कॉल किया कि देख ये मेरा एक फ्रेंड है, वो भर्ती हो गया है. I don't know if anyone else would have done it, and that too not for me, for someone like, अगर मैं पकड़ाया तो करता है तो बनता है उसको करना ही है. मतलब मेरा कोई फ्रेंड चला गया, उसने कहां से लॉयर वॉयर जुगाड़ लिया, कुछ करके वो आया, he came at midnight and helped this guy out. Now this is not possible from any other school friends and all. So during travels जब तुम मिलते हो, मतलब, and I'm sure तुम भी जब ट्रैवल कियोगे, people must have helped you from Vidyapith, suddenly कोई connection बन गया. I remember even in Switzerland, Geneva से पास एक अपना आश्रम है, and like मेरा टैक्सी एक बार स्टक था, and I actually वहां पर बोर्ड दिखा, मैंने बोला आश्रम इधर में, मैं इधर जा रहा हूँ, आपका जब ठीक हो जाएगा तो मुझे पिक करना. And that 1 hour I spent in that ashram was close to, it's middle of Lausanne and Geneva somewhere. So वहां मतलब ये out of the blue आश्रम्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जितना कनेक्शन बनाओ उतना फायदा है. बचपन में हम लोग के पापा मम्मी कहाँ घुमाने ले जाते थे, जहां पर भी रिलेटिव रहता था ना, कोई अगर रिलेटिव हैदराबाद शिफ्ट किया तो हैदराबाद घूम लेते थे उसी बहाने हम लोग. तो वैसे ही अपना कनेक्शंस बना के रखना है. अगली बार हम लोग लग्जमबर्ग जा रहे हैं सब लोग, रितेश डा क्या, तो ऐसे ही होता है विद्यापीठ का फायदा. मैं तो सब बोलता हूँ आयुष, जब से हमने मूव किया तो हमारा यूरोप में, पेरिस में हमने आश्रम में रियूनियन किया. जैसे तुमने बोला ना, हमारा रिलेटिव जहाँ आश्रम है वहाँ तो पेरिस में किया. फिर अर्चेस है कि नहीं, अर्चेस के भाई से मैं एम्स्टर्डम में हमारा रियूनियन हुआ था. तो अभिषेक टिब्रेवाल जस्ट 6 महीने पहले मूव हुआ है, तो उसका मैं फेसबुक में अभिषेक को हमेशा विश करता हूँ. तो मैंने उसको विश किया, फिर उसका मैंने देखा लोकेशन एम्स्टर्डम है, तो मैंने उसी से उसको मैसेज किया. मैंने उसको बोला साले तुम एम्स्टर्डम मूव हो गए हो, बताया भी नहीं. तो उसका मतलब आधे या पौन घंटा बाद मैसेज, यार रितेश दा सॉरी बहुत बिजी था, मिलते हैं. मैं बोलता हूँ कि मैं क्यों मिलता हूँ, हमारे यूरोप में 106 लोग हैं, सबको मिलाते हैं. तो बोलता है रितेश दा गजब आइडिया. तो मैं बोलता कि चलो तुम हमारे नीदरलैंड्स के वाइस प्रेसिडेंट हो. उस बंदे ने, और हमारा एक सुशोभन बंदोपाध्याय है, हमारा जूनियर होगा, वो सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा है, वो हेग में रहता है, डेन हाग में.
तो सुशोभ, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि अभिषेक ऑर्गेनाइज करेगा, तो सुशोभन ने बोला कि रितेश दा, आई एम वेरी एम्बेरेस्ड बट यू नो आई ग्रेजुएटेड, मैंने विद्यापीठ में सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा है, विल आई बी कंसिडर्ड एज ए अलुमनाई? आई सेड come on, even if you studied for 1 month, if you are in Vidyapith, yeah. तो बोलता ठीक है, देन वो और अभिषेक टिब्रेवाल ने मिलके पूरा 1 day ट्रिप एम्स्टर्डम का, वंडरफुल, they organized a trip to the tulip gardens, then we hired a whole boat, we had lunch in an Israeli restaurant, they had a lunch in Surinamese Indonesian restaurant, very well. So around 24 people came, including some of the kids. There were 3 kids and some of the people who have lived in Netherlands, but they met for the first time. And similarly, we have our junior Ayush, तुम बोलते ना relative, तो यहाँ पे Saarbrücken करके, it's a good, there is a guy who's doing his PhD in chemistry, काफी junior है, तो बोलता रितेश दा मुझे भी organize करना है, तो he organized a trip to Germany and 16 people, not 16, I think 12 people came from Germany, Luxembourg and France, and we had a good time. So the point being, जो आयुष तुम बोल रहे हो ना कि that sense of Ramakrishna mission and milna, that's the most important thing. I personally I enjoy it very much. And अभी हमारा next trip Berlin है, और तुमको that will be in September, so Luxembourg का है, if someone wants to come, the doors are open. In fact, हमारा एक junior है, he's the head of physics in University of Luxembourg. So whenever my wife Neha goes to India or something, उसको पता होता है कि रितेश दा बाहर रेस्टोरेंट से खाना या टेक अवे मंगाते, तो 2 वीक पहले बोला रितेश दा, उसने अड्डा किया था, उसका अड्डा हुआ था, तो उसने बोला कि अड्डा खत्म हो, रितेश दा घर पे आइए, माय वाइफ शी इज आल्सो रिसर्च, शी इज आल्सो बिजी, मैं, आप और मेरा उसका 2 साल का बच्चा है, वी विल हैव पिज्जा. तो दैट्स द थिंग. फिर मैं अपना ई स्कूटर है, मैंने बस पे चढ़ा कर उसके घर गया, then we had pizza and you know, so these things are priceless. उसने मुझे एक बार विद्यापीठ को जो दुर्गा पूजा में खिचड़ी बनाते हैं ना, बंगाली स्टाइल का यूनिक स्टाइल होता है नहीं, वो बोला, मैंने बोला कि मुझे बहुत मिस होता है. A week later that guy calls me and said रितेश आपके लिए सरप्राइज है, घर पे आइए. मैं उसके घर गया and he prepared that Bengali style, और रितेश आपको मिस होता था ना, and वो खिचड़ी बना के खिलाया. So that's one thing about travel, you know, we must meet at least our juniors, seniors, दादा लोग जो भी होते हैं, मिल जाते हैं और काफी हेल्पफुल भी होते हैं ना. और in the same vein, जब भी कोई टोरंटो आए, मैं हूँ, please reach out to me and I'll make sure. Ayush, I think Sanjeev Sinada 1992 wants to ask some questions. अरे अब तो पूछने से एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा. नहीं पूछिए. पर्सनल बातें अब हो गई, अब फिर वापस ग्लोब बातें करना. तुमने जो स्वामी जी का जो कोटेशन किया ना, वो मैंने पढ़ा था और मेरे मन में भी कई बार आता था कि ये रियली में ये एक्सपीरियंस, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वैसा एक व्यक्ति दिख गया जो सही में पूरी दुनिया में घुमा और कहाँ किस तरह का एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस तरह से लाइफ मूवमेंट्स हो रहा है, वो देखा है. तो मुझे एक चीज पूछना था. हम लोग ना एक और चीज पढ़े थे स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स में, जापान के बारे में. तुमने बोला भी, जापान के बारे में विशेष करके मेंशन भी किया. तो मुझे एक विशेष करके एक क्वेश्चन है जो इंडिया का प्रेसिंग इशू है. तो मैं कोट करता हूँ स्वामी जी को, उस पर थोड़ा तुम्हारा कमेंट चाहिए कि उनको शायद कुछ सोल्यूशन भी दिखा हो. तो ये है, जस्ट अ मिनट, एग्जैक्टली पढ़ता हूँ. इन माई ओपिनियन, इफ ऑल आवर रिच एंड एडुकेटेड मैन once go and see Japan, their eyes will be opened. There in Japan, you will find a fine assimilation of knowledge and not its indigestion, as we have here. They have taken everything from the Europeans, but they remain Japanese all the same, and have not turned European. While in our country, the terrible mania of becoming westernized has seized upon us like a plague. तो ये जो है, मुझे लगता है कि हम लोग, मेरा परसेप्शन है, मैं बहुत स्टडी नहीं किया हूँ, मतलब जब से सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन के आसपास हम लोग बहुत सारे इंडियंस जो है, खास करके IIT IIM वाले लेवल पे, वो सब अमेरिका चले गए. बहुत तेजी से वहां पे माइग्रेशन हुआ. तो
मुझे लगता है कि मेजर एक्सपोजर जो है वो अमेरिकन कल्चर से है, कुछ यूरोप से है, और जापान के तरफ उतना मूव नहीं किए लोग। तो मुझे बस ये जानना था कि क्या इस कारण से भी है क्या कि लोग एक दो लोग जैसे यूरोपियन को सिर्फ देखा या ब्रिटिश को एक देखा, एक कंट्री को देखा, तो शायद एक लग गया कि यही एक अच्छा होता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या तुमने 70 कंट्री ट्रैवल किया, तो जो लोग सफिशिएंट 3 या 4 कंट्री 5 तरह के वैरायटी ऑफ कंट्री घूम लेते हैं, तो उनको फिर ये बुखार उतर जाएगा क्या ये एपिंग करने का? तुमको क्या लगता है? पहले तो मैं जापान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके जो मेन क्वेश्चन है, जो कोर क्वेश्चन, उस पर आना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब स्वामी जी ने ये कोट किया वो टाइम अलग था। पहले तो जापान जो था वो अलग था। उसमें जापान एक बहुत ही क्लोज सोसाइटी उस समय हुआ करता था, बिफोर लाइक द वर्ल्ड वार्स एंड ऑल, और इट वाज इनक्रेडिबली लाइक ट्रेडिशनल, बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव था। Today's Japan is actually aping American culture, to be very honest. If you go there, you will feel कि है, उनकी अपनी आइडेंटिटी भी है, उनका अपना एनिमे एंड ऑल दैट अपना है, but it's more or less it reflects the US in terms of its consumerism, in terms of the life people lead. And to be also honest, they are still very closed. They might be very welcoming, very helpful. आपके पास आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी कि कैसे जापान के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने, बट वो बहुत क्लोज हैं। मतलब अगर आप वहां पर काम करने जा रहे हो ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जापान में काम भी करते हैं, दे विल नॉट embrace you until unless you speak Japanese. So language को बहुत वैल्यू देते हैं, and they're not as open as what we think they are. First of all, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पे अभी भी उनमें वो प्राइड ऑफ, एंड विच इज अ ग्रेट थिंग, विच इज अ समथिंग टू लर्न। एज आई सेड, कोई भी चीज यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जो चीज आपको उसकी अच्छी लग रही है वही चीज उसकी बुराई भी है। तो दे आर रेसिस्ट टू सम एक्सटेंट। सो पहले तो मैं जापान के बारे में बोलना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेट कंट्री, वंडरफुल टू ट्रैवल, but it still has its inherent biases ingrained in people. Like they are very racist, especially if they come to know that you are here for good, if you are here to stay and not to just travel. And they are not no longer the Japan which Swamiji must have seen, because they have kind of lost their roots for obvious reasons. Like they were एक बार जब सिर्फ बॉम्ब तो नहीं गिराया ना उन्होंने, पूरा आर्मी वहां शिफ्ट कर गया, बेसिस बन गए, अमेरिकन कल्चर वहां पर सीप इन कर चुका है, बेसबॉल खेलते हैं, एकदम अमेरिकन है, if I might say. दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि हाँ कितनी ज्यादा कंट्रीज, मतलब कितना ट्रैवल करना चाहिए, आई टोटली बिलीव इन दिस कि हम लोग अक्सर थाईलैंड या मतलब गिने चुने 10 कंट्रीज जाते हैं और हमारा परसेप्शन होता है कि भाई हमने तो दुनिया देख ली, हमने तो आई हैव सीन सो मेनी कल्चर्स, आई हैव सीन दिस। दिस इज नॉट ट्रू। एवरी सिंगल, इवन छोटा सा ओमान कंट्री था, मैं गया, आई वाज अमेज्ड, लाइक जो डेजर्ट में उनके साथ खाना खाया, डेजर्ट के अंदर सैंड के अंदर डाल के, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, ओमान, but it has its own culture, its own identity, and so much to learn, so much to experience. So जितना ट्रैवल करो उतना कम है। हर कंट्री छोटा से बड़ा का एक अपना एक कल्चरल आइडेंटिटी है, and yeah, we make a mistake sometimes to go to these bigger countries and try to get those cultures and form our world understanding based on those cultures, but that should not be the case. If given an opportunity, if you have the right resources, travel within a country, travel, forget outside country. हम इंडिया में रहते हैं और आधे लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हुए, राइट, हमारे, जबकि हमारे फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के हैं काफी लोगों के, बट वी स्टिल हैवंट बीन टू मणिपुर, राइट। तो हमारी जो वर्ल्ड व्यू छोड़िए, इंडिया व्यू इज स्टिल लिमिटेड टू पंजाबी खाना एंड मे बी मैक्सिमम केरला, साउथ इंडिया में, मतलब दिस इज हाउ वी आर, राइट, एज पीपल। सो जितना ट्रैवल करेंगे उतना नया एक्सपीरियंसेस मिलेगा, उतना अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड का, इंडिया का आपका चेंज होगा। I don't know if I answered your question, but this is what I believe. There's no end to it. ये 2 मिनट में तो खैर समेटना आसान नहीं है, ये तो 100 साल का पुराना इशू है, ठीक है, वेल एक्सप्लेन। एक्चुअली ये जो तुमने बताया ना कि जापान में लैंग्वेज को लेके, हमारे कॉलेज में 3rd ईयर में ही जो लोग इंटरेस्टेड थे उन लोगों ने जापानीज लैंग्वेज का कोर्स लिया था, और तब जाके वो लोग उधर गए थे, मतलब 3rd ईयर से पढ़ना शुरू किया, जापानी सीखना शुरू किया था। और प्लस इंडिया के अंदर भी हम लोग एक एनालॉजी ले सकते हैं, जैसे हम लोग जो लोग, मेरे बैचमेट्स जो लोग रह गए बिहार में ही, मतलब बचपन के फ्रेंड्स लोग, और उन लोग का जिस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायसेस होता है, सपोज लेके कि बिहारी लेके या फिर जात को लेके, और जो लोग फिर इंडिया में कॉर्पोरेट के कारण नौकरी के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमते रहे, तो उनका थोड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन, एक ब्रॉड व्यू बन जाता है। ये चीज़ इंडिया के अंदर में भी दिखता है,
तुमने जो बताया कि नेबरहुड में भी मिलो तो थोड़ा तो ट्रैवल हो ही गया। बिल्कुल अच्छा 100%. अच्छा एग्जाम्पल। Strongly believe in that. Thanks. Thank you भैया. Okay, I think कोई और questions? क्वेश्चंस नहीं आयुष, हाँ जी, तुमने बोलिए। बताया कि तुम मेट्रॉनिक में हो, सो Yeah. हमारे एक 2 साल सीनियर है राजा दा, he is Mhm. also in met, you may know him, he is in Medtronic, USA. He is based in I think Midwest or something. So I What will is his send name? you a Okay. I हाँ don't हमारे know. बैच के राजा दा आपके बैच के ना, संजीव दा, राजा चौधरी, हाँ हमारे राजा चौधरी. हाँ And now I just remember your Luxembourg Medtronic office is just 20 meters away from my apartment. So whenever I pass by, so you have another excuse to plan with to come to Luxembourg with, you know, our Ramakrishna Mission alumni. Raja Chaudhary, the Senior Director, Strategic Initiatives. हाँ, तो आयुष ये मिनियापोलिस में बैठते हैं, तुम अभी मिले नहीं हो इनसे? नहीं मिला हूं मैं यार, मुझे मालूम ही नहीं था कि आरकेएम के, मुझे क्या मालूम, जब तक उनसे काम नहीं है तो मुझे क्या करना नहीं, but this is good to know, like it's I can connect with him. आयुष तुमको एक स्टोरी बताते हैं इसी टाइप का, आरकेएम कनेक्ट का, प्रोफेशनली आरकेएम कनेक्ट. तो हम बाई साइड में हैं, एज यू लाइक फ्यू ऑफ यू माइट नो. तो हम लोग का सेल्स साइड से मीटिंग होती रहता है. तो एक मीटिंग था स्टैंडर्ड चार्टर्ड से. सो आई कॉल्ड फॉर द इंडिया इकोनॉमिस्ट फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड. तो आईएम मीटिंग में बातचीत चालू हुआ. तो उनको देख के ना मुझे लगा कि मैं इनको कभी देखा हूं. And his accent was very much Bihar and all. So, and the name is Saurabh Kumar. तो बातचीत चालू हो गया. फिर मीटिंग के बाद मैंने पूछा कि by any chance are you from Bihar and like schooling कहाँ से है? Because he introduced himself with like from college onwards, IIM etc. But school के बारे में कुछ नहीं बोला. So then he tells that he's from 98 batch, Saurabh Kumar, from देवघर आरके मिशन. फिर मयंक दा का बात चालू हो गया. फिर पूरा हम लोग का बैच का, शक्ति महाराज का, ये वो पूरा कहानी स्टार्ट हो गया वैसे ही. तो यू नेवर नो व्हेन यू मीट पीपल एंड ऑल, लाइक सडनली. मैं जैसे ही उन्होंने बोला राजा चौधरी, मैंने सर्च कर लिया. मैं आपको इंट्रोडक्शन एक भेजने वाला हूँ अपनी तरफ से. आई हैव टू कनेक्ट. और नहीं, और कब फायदा निकल जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में इफ यू गेट टू मीट सीनियर्स एंड और आरकेएम कनेक्शन, इट ऑलवेज हेल्प्स, राइट. सो मतलब कॉलेज के तो बहुत लोग मिलते होंगे उनको, हो सकता है, लेकिन आरकेएम का कोई मिल रहा है जूनियर, आई थिंक. ओके, गुड. इफ नॉट एनी मोर क्वेश्चन वी कैन कॉल इट अ डे. So Satyam, over to you. Yeah, so I think we have Rajesh da, you'd like to ask? Yeah. Brajesh, yes. quick question. So I think, so Ayush, you have Vidyapith as a camaraderie with you for a long time, and then you went to IITs, I think IIMs. So how do you see those groups which are also very thick with each other? Yeah. And then there is RKM. So what are some interesting facts about both of them? How do you see Sure. these other Very good question. loyalties, I can say, and RKM? ठीक है. अब अगेन मैं एज लाइक माय प्रेजेंटेशन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. विद्यापीठ के लोगों के सामने मैं नग्न हूं, मतलब मैं, दे नो मी इनसाइड आउट, राइट. लेकिन बाकी आईआईटी आईएम के जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने मैं एक परसेप्शन मैनेज कर रहा हूँ अपने. देयर इज अ सर्टेन बिट ऑफ एक छोटा हिडन कंपटीशन भी है. वी आर ऑल, यू नो, कोई अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, वो एक फाइट है. तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हमारे साथ, मतलब देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो फीलिंग ऑफ कि तुम अच्छा करो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुम मैं अच्छा करूं. लेकिन शायद वो फ्रेंडशिप नहीं है. दूसरी चीज क्या है कि विद्यापीठ में, बिकॉज वी वर दैट नग्न थिंग, मतलब बिकॉज वी न्यू ईच अदर सो वेल, वी हैव, मैंने, हमारा सारा तीर का तर्कश खाली है. मतलब अपने आपको इम्प्रेस करने का ये सब कुछ खत्म हो चुका है. आई कैन नॉट इम्प्रेस यू फर्दर, राइट. आई कैन नॉट form another, like I cannot project myself to for you to make another impression of myself.
which is not the same in case of these school college wale friends, right? Rather, I'll share something from my side. विद्यापीठ में मुझे कुछ चीजें अपने में फ्लॉ लगती थी, तो मतलब मैंने सोचा कि जब मैं IIT खड़गपुर जाऊंगा, फर्स्ट डे से I'll transform myself, I'll do this, like it was just like my Bible, there was a plan in my head कि मैं यहाँ ज्वाइन करूंगा, ऐसे फ्रेंडशिप बनाऊंगा, गर्ल्स से ऐसे बात, all of that, right? So वो रियल आयुष है कि ये रियल आयुष, I don't know. But जब मैं विद्यापीठ के लोगों के सामने, I feel like a kid again. Every time I have met with my Vidyapith friends, there is this sense of child still there in us. वो निकल जाता है, बातचीत करने का तरीका अचानक से कॉम्प्लेक्स के बजाय हम करके बात करना शुरू करता है. सोच के आया था कि आज प्रेजेंटेशन में पूरा अंग्रेजी बकूंगा, लेकिन हुआ नहीं, बीच में अपना निकल ही रहा था फ्लो में. If it was the same presentation I was making to say friends from IIT or IIM, I would have never done so. And this is even more common in IIM compared to IIT. IIT फिर भी you join at a very 18-19 का एज होता है, you actually make good friendships, and I have some great friends from there. IIM वाले सारे फ्रेंड्स में तो आधे समय यही चलता है कि अच्छा 1.3 million, 1.5 million, ये पैकेज, वो पैकेज, यही चलता है बस. This is all numbers and this is a fact. So वो फ्रेंडशिप है कि नहीं मुझे नहीं पता है. IIM वाले फ्रेंडशिप को तो मैं नाम के लिए रखता हूँ फ्रेंडशिप. IIT में फिर भी I've made some great friends. And RKM तो भाई RKM है, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है. हमारी जब आए थे तो जूता का फीता बांधने नहीं आता था, और जब गए तो पता नहीं क्या क्या सीख लिए थे, क्या क्या बांध सकते थे पता नहीं. So that's it. Yeah, the huge difference between the friends. And again, Bojan, you have been someone who has been very close to RKM at some point and then kind of went far, and then I'm sure coming back. So तुमने वो देखा होगा कि जब RKM के साथ एक रिश्ता है अलग सा, तुम दूर भी जाओ तुम it will pull you back. हम RKM से निकल सकते हैं, RKM हमारे से नहीं निकल सकता. True, very true. Good to know. Okay, so thank you, Aayush. I think a lot of people, all those people who joined the session today will be motivated to take more travels in their lives, and people who would watch your session on YouTube and read your blogs, they would also get motivated. So thank you for taking your time. It is early morning in Canada. You have spoken very wonderfully. Like the flow of the speaking is something we can learn as a junior also, because how to present something. So very good presentation. So I think we can close the session now, and we can I am stopping the recording, so if anybody would like to have some informal chat, then they can stay for 5 more minutes, and then we can close the session. Thank you for joining the session. Thank you, Satyam. I